Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you, students? I'm pretty good, alhamdulillah. Today we are going to learn a new sound. Are you ready for that? That's great. So listen and repeat after me. It's n sound. It's n. Repeat after me. N. N. Nest. N. Nest. And how to write n? We will start from dot and follow the arrow. N is down, goes up and bumpty. Alright, now let's write n here. N is down, goes up and bumpty. N, necklace. N, necklace. Look here, what is this? Shabash. N, net. N, net. What is this? Good. It's n. N, nose. N, nose. इसी तरह आपने न को यहाँ और यहाँ भी अच्छे से ट्रेस कर लेना है. ठीक है प्यारे बच्चों? Now move to the next page. Look here. What is this? Net. Good. It's net. And what's the beginning sound of net? Good. It's Now let's see how to write N is down, goes up and bumpty. See once again. N is down, goes up and bumpty. Good. ऐसे ही यहाँ भी हम अच्छा से n लिख लेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, आपको पता है न की एक बहुत मज़े की एक्टिविटी भी है. एक्टिविटीज़ तो सब बच्चों को अच्छी लगती हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है. Look here. Do you remember what is this? It's a nest. It's a nest. What's the beginning sound of nest? Shabash. And can you find where is n? Is it n? No. Is it n? No. Is it? Yes, it's n. और भी है कहीं पर n? ढूंढिए. Here it is. It's n. What to do here? We have to find the circles which contains the sound n like this. Okay? इसी तरह हम और भी सर्कल्स ढूंढेंगे जिसमें n साउंड है और उनको कलर करेंगे. Like this. मज़े की गेम है ना? तो आप बहुत जल्दी से ढूंढ लेंगे, है ना? That's great. Alright, now look here. Here we have another activity for you. But before that, we have to write n here. So let's see how to write n. We will start from the dot. N is down, goes up and bumpty. See once again. N is down, goes up and bumpty. Once again. N is down, goes up and bumpty. That's quite easy, is it? Good. अब हम एक्टिविटी खेलेंगे. कौन सी एक्टिविटी है ये देखिए. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. हमने देखना है कि इनमें से किसकी शुरू की आवाज़ न है और हम उसको सर्कल करेंगे. ठीक है? Tell me, what is this? It's dog. And what's the beginning sound of dog? D.
इसकी बिगनिंग साउंड नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे. What is this? Good, it's an arrow. Arrow. Is this a friend of arrow? ये तो ए का फ्रेंड है, इसलिए हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमें तो के फ्रेंड्स ढूंढने हैं, है ना? शाबाश. What is this? Yes, it's nest. What's the beginning sound of nest? Good. So we will circle it. Now let's see, what is this? It's necklace. It's necklace. And what's the beginning sound of necklace? Good. नेकलेस की शुरू की आवाज़ भी है, इसलिए हम नेकलेस को भी सर्कल करेंगे. Like this. What's next? Nose. Good. And what's the beginning sound of nose? Good. So we will circle nose. मज़ा आया प्यारे बच्चों? Very good. प्यारे बच्चों, लिखना तो बहुत इजी है. चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास डॉट्स नहीं होंगे तो हम को कैसे लिखेंगे. Look here. What is this? It's necklace. It's necklace. And what's the beginning sound of necklace? Good. Let's see how to write without dots. यहाँ पर हमें डॉट्स के बगैर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? We will start from the dot. Is down, goes up and bumpty. ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना प्यारे बच्चों? ऐसा तो आप भी लिख सकते हैं. फिर से देखिए. Is down, goes up and bumpty. वाओ, ये तो बहुत आसान है. फिर से देखिए हम कैसे लिखेंगे. Is down, goes up and bumpty. वाओ, इसी तरह से हम अच्छा सा लिखते हुए अपने इस होमवर्क को भी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों? Now complete your homework. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम.